Assalamu alaikum. Welcome in the Learning Hub with Samina. First of all, I'm gonna little bit introduce myself. जिसको उर्दू में तारुफ कहते हैं. My name is Samina. I belong from Pakistan. I have been teaching myself English from some time, and I'm gonna share the same tips and knowledge of my English with you all, and I hope it does go great. Introduction बहुत important part होता है किसी भी first impression का, especially in interviews, job interviews. एंड जब आप किसी स्ट्रेंजर से फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताऊंगी और पैराफ्रेज करके बताऊंगी कि हाउ यू कैन अरेंज द होल थिंग एंड दिस इज़ वेरी सिंपल वे ऑफ डूइंग इट. हमेशा इंट्रोडक्शन का आगाज़ ग्रीटिंग से होता है जो कि 2 वेज पर मुश्तमिल होता है. It is distributed on 2 ways. One is formal way and the other one is informal way. Formal way is the one we normally use with professional people, and that is hello everyone. If you are Muslim, आप बोलेंगे assalamu alaikum. अगर सामने वाला भी मुस्लिम है then again you will say the same. वक्त को देखते देखते भी आप गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून जैसी भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं इन ग्रीटिंग्स. सेकेंड वे है इनफॉर्मल वे. इनफॉर्मल वे वो है जो आप किसी प्रोफेशन के साथ और स्पेशली मीटिंग में तो नहीं यूज़ कर सकते, स्पेशली इंटरव्यूज़ में. इट्स समथिंग यू कैन यूज़ विद फ्रेंड्स लाइक हे, हेलो, यो, काइंड ऑफ अ जेंजी टॉक, एंड देन व्हाट्स गुड, व्हाट्स अप. This is something you usually use online, not in a professional way or interview, nothing at all. सेकेंड हम जंप करेंगे ऑन नेम पार्ट. ग्रीटिंग के बाद डेफिनेटली आप अपने नाम का तारुफ करवाते हैं विच यू कैन ऑलवेज से इट इन सम वेज जो मैं आपके सामने मेंशन करूँगी. वन इज़ वेरी सिंपल वे और हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज़ आई एम. जिस तरह मैंने बोला आई एम समीना and my name is Samina, my name is Rahul, my name is Ahmed, my name is that, my name is this. And अगर आप फ़ोन पे हों तो you can always say hello, this is Samina, hello, this is Ahmed. Also use of myself does not look appropriate in any sentence. हमारे यहाँ बहुत लोग यूज़ करते हैं like myself Samina, myself Ali. It doesn't look good, to be very honest, so don't use it. Next we will be jumping on location, जो कि बहुत ज़रूरी होता है mention करना. एंड उसको हम कुछ इस तरीक़ों से बोल सकते हैं लाइक आई एम फ्राम इस्लामाबाद पाकिस्तान, आई एम फ्राम पेशावर पाकिस्तान, आई बिलोंग फ्राम लाहौर पाकिस्तान, आई बिलोंग फ्राम इंडिया, आई बिलोंग फ्राम न्यूयॉर्क. हम इस तरीक़ों से बोल सकते हैं. एंड ऑल्सो वी यूजुअली यूज़ आई कम फ्राम सरगोदा, आई कम फ्राम दिस और दैट सिटी. एंड पर्सनली जो मैं बहुत पसंद करती हूँ यूज़ करना, एंड दैट इज़ आई ग्रू अप इन. जब भी हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं आई लव टू यूज़ इट दैट आई ग्रू अप इन सरगोदा, आई ग्रू अप इन इस्लामाबाद पाकिस्तान, एंड आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन इस्लामाबाद पाकिस्तान. उसके अलावा जो सेंटेंस मुझे बहुत पसंद है दैट इज़ आई हैव बीन लिविंग इन. दिस इज़ अ वेरी गुड सेंटेंस ऑफ सेइंग इट बिकॉज आपके पूरे पैराग्राफ को ये एक यूनिक बना लेता है और सामने वाले को, पढ़ने वाले को ऐसा लगता है कि ओके दिस पर्सन नोज इंग्लिश. सो आई ऑलवेज से दिस दैट आई हैव बीन लिविंग इन पाकिस्तान होल माई लाइफ. सो दिस इज़ अ वेरी गुड वे ऑफ सेइंग इट. नेक्स्ट वी आर गोना जंप ऑन पोजीशन एंड क्वालिफिकेशंस. अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप डेफिनेटली क्वालिफिकेशन स्टडीज़ को मेंशन करेंगे. इफ़ यू आर डूइंग अ जॉब देन यू विल मेंशन पोजीशन इन अ कंपनी और समथिंग लाइक दैट. तो उसको फ्रेज हम ऐसे कर सकते हैं जैसे मैं लिख रही हूँ आई वर्क at dash company in the dash department. This is such a great way of saying it. ये आप हमेशा positions के लिए भी बोल सकते हैं और students भी बोल सकते हैं. मैं telling a person about their course, about their department, about the university. And जैसे मैंने लिखा कि I work at Google in the marketing department. तो ये उसको पूरा एक paraphrase कर देता है. अगर आप students हैं you can always use that. I study at LUMS, like I study at LUMS in the English department. So this is a very great way of saying it. उसके अलावा students के लिए एक और best way होता है तरीका बोलने का which is I am about to graduate, right? हम हमेशा बोलते हैं जो लोग ग्रेजुएट होने वाले हैं दे कैन यूज़ इट, और जो लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं और वो अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट को मेंशन करना चाहते हैं दे कैन ऑलवेज से दैट आई एम केमिस्ट्री ग्रेजुएट, राइट, और आई एम बायोलॉजी ग्रेजुएट. और जो लोग अभी पढ़ रहे हैं एंड दे आर स्टिल studying, they can say I'm currently studying in dash university, I'm currently studying in GC University, I'm currently studying in University of London, right? तो आप हमेशा ये वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत अप्रोप्रिएट वे ऑफ सेइंग इट होता है.
इनके अलावा I have a degree in DVM, I have a degree in MBBS is another way of saying it, जो कि आप बोल सकते हैं. अब हम जंप करेंगे अपने 5th पॉइंट पे विच इज़ फैमिली. और ये आप प्रोफेशनली तो मेंशन नहीं कर सकते अनलेस यू हैव बिन आस्क्ड, बट आप फ्रेंड्स के सामने, किसी स्ट्रेंजर्स, न्यू फ्रेंड के सामने शेयर कर सकते हैं दैट आई हैव these many of siblings, I have 2 sisters, I have 2 brothers and something like that. And now is one of my most favorite part, which is sharing about your goals in life, sharing about the real you, or even you can like phrase it in a hobbies. Depend करता है कि आप किसके साथ बात कर रहे हैं. If you are like meeting a colleague, if you are meeting a stranger, then you can always share hobbies. In fact, in online and Web3 jobs, they are also mentioned that you have to mention them and you can always bring those up. And okay, this is the fun part because this is something you only know what you want to share with the front person, right? Because name, location, position, studies, everything is mentioned. So this is something you want to share. आप बताना चाहते हैं कि I'm passionate about gardening, I'm passionate about this or that, I have a dream to travel the world, I have always wanted to be a teacher and that's why I'm applying to be one, right? Because if you are giving an interview, it's my dream to work for Google one day, something like that. Because आप अपना एक छोटा सा पार्ट अपना शेयर कर रहे हैं. Keeping in mind the whole paraphrase and tips I mentioned, I have compiled an introduction for you guys. It's a very little bit example and I'm gonna narrate it to you as well. Hello, nice to meet you. I am Samina. I belong from Pakistan and I work as copywriter and English teacher in school, which is something I never imagined I would do as profession, right? I was never good in English and it took me a lot of practice to learn it. I am very passionate and hardworking person, which is why I learned quickly. And lastly, it's my dream to travel to Canada for more better opportunities. And this is it. I think and I hope it helped. And I think this is a very easy yet very cheeky and yet very simple way to paraphrase your whole introduction. और ये आपकी बहुत हेल्प करता है, चाहे आप किसी के सामने बोल रहे हों या चाहे तो आप किसी इंटरव्यू में लिख रहे हों या फिर ऑनलाइन जॉब की क्राइटेरिया में you write it up. Just recently when I started working in Web3 online, I use this a lot. I use this method a lot because वहाँ पे you get a form where you have to put the information in, right? And ये method याद करना इतना आसान था कि मैंने हर जगह ये यूज़ किया और इनफैक्ट कई जगह पे अपने according to my will मैंने copy paste करके रख लिया कि I will copy paste it and it helped me a lot and I hope it helps you too.